Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. I'm Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily News Analysis. And my name is Ashish Bhargav and I welcome each and everyone here and I hope that you guys are doing well. And why the newspaper analysis is important, that because it gives you an idea like what kind of questions that can be framed. And as far as the newspaper is concerned, as you know that most of the current affairs questions, they are framed from the newspaper, right? And we cover in this class, in this session, is national news, international news, economy based news, sports based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, which is also important for the, especially for the law entrance exam. Supreme Court verdict, any amendments, any bills, that is also important for your exam perspective. As you know that the newspaper is giving you an idea like कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप की क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है. सो टू अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़पेपर कंसेप्ट यू मस्ट नो द basic concept about the nitty-gritty of the subject. This is very very important, right? And as we know that why newspaper is important, because most of the questions are from the current affairs, they are framed from the newspaper itself, right? Now moving forward, here we start the quote of the day. If your voice is high, only a few people will hear. If your thought is high, then many people will hear and many people will listen. And to inculcate this thought process, what exactly you need to do to is current affairs. And we have taken initiative questions of the day, and questions of the day is important because at the end of the session we'll ask you 5 questions. They are directly extracted from the Hindu or Indian Express. So the newspaper is very very important. Why I'm telling you this? Because the newspaper gives you an thought process. It helps you in the inculcate the thought process. And one another thing is that the newspaper gives you an idea कि आपके एग्जाम में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस होंगे. एंड वन मोर थिंग is what kind of questions that can be framed or newspaper. चलो सबसे पहला न्यूज़ हमारा है इंडिया क्लाइम 7 points to 80 on passport index. Singapore at top position. So इंडिया ने क्लाइम किया 7 places on Henley passport index. That is called Henley passport index, right? So अभी इंडिया की 2023 में क्या पोजीशन है? 2023 में पोजीशन है 80th पोजीशन है. एंड 87 जो थी वो लास्ट ईयर थी. So though the number of the countries allowed visa free access to the Indian passport holders remains unchanged. और ये जो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स है इज़ द रैंकिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन द होल्डर्स एंड दैट कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीज़ा. So this index include 199 passports and 277 travel destination. And the index is brought out by the Henley and Partners. 2014 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 76 with 52 countries allowing Indian passport holders visa free access था जिनमें. And but its performance has not been linear. The rank 88 2015 और उसके बाद ये जर्मनी, इटली एंड वी कैन से, और अभी जर्मनी, इटली या स्पेन को ऑक्यूपाइड किया सेकेंड प्लेस पे, राइट? फर्स्ट प्लेस पे जो है जहाँ पे इस हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक दी गई, दैट इज नोन टू बी इट वाज रिप्लेस्ड बाय सिंगापुर, राइट? Japan, which occupied the top position on the Henley Passport Index for 5 years. So 5 consecutive years, Japan was in the top position. Now it was replaced by Singapore, which is now officially the most powerful passport in the world. So there are many questions that can be framed. So the last 5 years, the answer would be Japan, and if we say the Singapore is in the top position, right? So it was replaced the Japan, which is now officially the most powerful passport in the world, with its citizens able to visit 192 travel destinations out of 227 around the world visa free, right? So the Henley and Partners have also conducted an exclusive new research resulting in the Henley Openness Index, which measures how many nations does a country allow visa free access.
So India was ranked 94 out of 97 rank for allowing only 4 country visa free access. अब यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस किस कंट्री के अच्छे इसके बारे में, हैंडली पासपोर्ट के बारे में. सो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स इज द ओरिजिनल authoritative ranking of all the world's passport according to the number of destination the holders that can access without a prior visa. ये पब्लिश करते हैं हैंडली एंड पार्टनर्स, अ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फॉर्म. इसकी पार्टनरशिप है यहाँ पे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, राइट. और ये जो इंडेक्स है दैट इंक्लूड्स 199 डिफरेंट पासपोर्ट एंड 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन, द सेम थिंग दैट वी हैड डिस्कस. कुछ हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट टेकअवेज फॉर योर एग्जाम यू मस्ट नो. तो सिंगापुर को टॉप पोजीशन में रखी गई है पासपोर्ट रैंकिंग विथ वीज़ा फ्री एक्सेस टू 192 ग्लोबल डेस्टिनेशन विथ वीज़ा फ्री एक्सेस टू 190 डेस्टिनेशन. 3 यूरोपियन कंट्री जिसमें जर्मनी, इटली एंड स्पेन शेयर द सेकेंड रैंक ऑन द लिस्ट. जापान द प्रीवियसली टॉप रैंक होल्डर था, स्लिप डाउन टू द थर्ड रैंक, एंड जापान शेयर द रैंक विद ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन. 101, 2 and 3 रैंक रिस्पेक्टिवली था सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान का. वर्ल्ड वीकेस्ट पासपोर्ट है. पाकिस्तान की जो स्पॉट है वो 100th है. ये जो पॉइंट है ना दोस्त, इसको आप याद रखो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया की हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में वर्ल्ड वीकेस्ट पासपोर्ट किसके पास है. तो दे विल गिव यू द ऑप्शन लाइक सीरिया, अफगानिस्तान, इराक. तो यू मस्ट नो एंड यू मस्ट हैव कीप एन आई ऑन दैट. India ki rank, I told you that India climbed 7 places to 80th rank from 87 to 80th rank. It shared the spot with Senegal and Togo, visa free access to 57 destination. So that is the important takeaways. And one more request, if you are new in this channel, please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. And please share this session to the many number of students. And here we can see ये आपकी द हिंदू की आर्टिकल है. इंडिया सिक्योर 80th रैंक ऑन हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स, which is among the worst countries for allowing visa free entry. ये जुलाई 19 की न्यूज़ है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट आर्टिकल टॉकिंग अबाउट चंद्रयान 3. कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं चंद्रयान 3 के बारे में. आपको बस इसमें ये ध्यान रखने की इसमें क्या क्या एग्जाम में पूछे आएंगे, राइट. सो इंडिया जो है अभी साइनेटरी है आर्टमिस अकॉर्ड का. किसका है? इंडिया ने भी रिसेंटली साइन किया है यहाँ पे आर्टमिस अकॉर्ड्स. ये आर्टमिस अकॉर्ड्स क्या है? रिसेंटली इंडिया ने साइन किया. इट इज़ एन काइंड ऑफ अग्रीमेंट विद द अदर लीडिंग स्पेस एजेंसीज लाइक नासा, ESA और जाक्सा जो जापान की है, एंड CSA जो कनाडा की है. So recently, the India is now a signatory of Artemis Accord, and Artemis Accords is a kind of agreement with the other leading space agencies. One is NASA, which is in US, and ESA, European Space Agency, which is in the Europe. JAXA is for Japan, and CSA, right, for moon exploration with a view of colonize it, right. So if you talk about Chandrayaan 3, so now well on its way to the moon, the spacecraft is an elliptical orbit going as far as 41,762 km from Earth and coming to close of 173 km. So even though everyone is focused on the final procedure of the soft landing, it is the journey before that is fraught with the difficulties, much like path to restart. So in 1957 में क्या हुआ था? एज अ रशिया लॉन्च स्पुटनिक. रशिया ने क्या लॉन्च किया था? 1957 में लॉन्च किया था रशिया ने स्पुटनिक. एंड स्पुटनिक उसके बाद विक्रम साराभाई हु वाज अ मेन फाउंडर ऑफ इसरो, उनके नाम पे एक स्पेस सेंटर भी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, राइट. सो 1957 की जो कहानी थी तो उसमें रशिया ने लॉन्च किया था स्पुतनिक को. एंड विक्रम साराभाई हु लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रिसर्च इन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. सो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि देयर आर सम हु क्वेश्चन द रेलिवेंस ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़ इन अ डेवलपिंग नेशन. टू अस देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी ऑफ पर्पस. सो दीज थिंग्स नीड टू कीप इन माइंड, राइट. wherever the story like about Chandrayaan 3 and all, आपको रिसेंट के साथ साथ उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को भी जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पूछते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या था.
अगर बात करें अपने इंडिया में, तो डिस्पाइट बीइंग कैपेबल, राइट, engaged only a fraction of space enterprises, और यहाँ पे ये पहली बार ऐसा हुआ है, this is the first time that India has partnered with the private sector on a major space mission, right? And lander and rover that will be deployed on the moon were developed a consortium of Indian companies in collaboration with ISRO के laboratories, and the ground control system जो थी उसको भी डेवलप किया है इसरो ने with the help of industries, and much of the mission data will be processed and analyzed by the private sector. So as far as the indigenization of the space sector, and we talk about the privatization, उससे क्या है कि हमारे जो इसरो है उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. Indian scientists are now taking part in a few fronting worldwide projects that are pushing technological boundaries. और बात करें अपने कंट्री की, तो इंडिया हैज़ डील्ड विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैलेंजेस इन द 30-meter telescope project in we can see collaboration with the Large Hadron Collider of CERN, राइट, जिनमें कि आपने सुना होगा गॉड पार्टिकल के बारे में. सो इस टाइप की डेटा आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी हमेशा, बिकॉज ये आपके दैट मेक्स यू वेरी अवेयर अबाउट ऑल दिस आर्टिकल. ठीक है, चलो. Now we move to the next article. Why are tomato prices still high? What is the size of Indian tomato cultivation? What has fueled up the current tomato inflation? Why is it being described as a seasonal issue? How does a spike in tomato prices affect the consumer price index? And what is the way of control inflation, volatility of tomatoes? एक वर्ड यूज़ किया था इंडियन एक्सप्रेस ने, टोमेटो मिक्स विच मीन्स जो टोमेटो की प्राइसेस है, देखो टोमेटो इज़ काइंड ऑफ पेरिशेबल आइटम जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है मार्केट में. ठीक है, और टोमेटो की जो प्राइस है, प्रोडक्शन है, इज़ कंसनट्रेटेड, लाइक वी कैन से लाइक आपका टोमेटो की प्रोडक्शन कहाँ किस स्टेट में होती है. पहले आपका हो गया आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, MP, कर्नाटका, ओडिशा एंड गुजरात. So Andhra, Madhya Pradesh, Karnataka, Odisha and Gujarat, these states account 50% of total production as per the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के figures के हिसाब से. तो Center has called its sudden and sharp prices rise in tomato a seasonal and temporary issue. जैसे किसी टाइम आपने देखा होगा नींबू की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है. So price of tomato over between 100 to 200 in the various part of the country. And the Reserve Bank of India latest monthly bulletin has highlighted the volatility of tomato prices has historically contributed to overall inflation levels in the country. How is tomato produced? आपको मैंने बता दिया कि आंध्रा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा एंड गुजरात में that accounts close to 50% जो मिनिस्ट्री ने अपनी डेटा रिलीज की हुई है. So there are major crops of tomato annually, Kharif and Rabi. Rabi crops has a market between March and August annually, while the Kharif crops comes to the market from September. So the some regions in Maharashtra and Himachal Pradesh, solans are able to grow tomato during the monsoon months. तो इसी प्राइस अचानक से हाइक हुई क्यों? जैसे क्या रीज़न है इसके पीछे? So there are multiple factors for the dip in the overall tomato production this year. So there are two reasons, being extreme weather condition and low commercial realizations of the crop for farmers in the month before June as well as the last year. अगर सीजनल इशू है तो सेंटर ने कॉल किया सडन एंड शार्प प्राइस टोमेटो अ सीजनल एंड टेम्पररी इशू. कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जिनका नाम किया है रोहित कुमार सिंह, दैट इज कॉल्ड रोहित कुमार सिंह, ने स्टेट किया देयर इज अ सीजनलिटी of tomato, adding that the data on tomato prices last 5 years shows that the rate had risen every year at this time. बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता है कि आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई को अगर कंट्री में इन्फ्लेशन को मेजर करना है तो उसके लिए दो चीज़ें होती है. वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज द सोली बॉडी लाइक रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द टू डेटा WPI एंड CPI. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे चीज़ बास्केट में हम लेते हैं प्रोडक्ट्स को और उसके बाद काउंट करते हैं कि हमारे कंट्री में कितनी इन्फ्लेशन है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ. हाउ कैन वी वोलेटिलिटी कंट्रोल? तो ये एक सीजनल इश्यूज़ हैं. ऑब्वियस आरबीआई ने इस चीज़ पर गाइडलाइंस दी कि
CPI इंडेक्स के साथ साथ कि इसमें बहुत जल्दी इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया. So it's अभी लेटेस्ट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग, which means National Institution for Transforming India. So we recently National Multidimensional Poverty Index को रिलीज किया नीति आयोग ने. States that nearly 13.5 crore people were lifted out poverty in the 5-year period till 2019-2021. So ये होता क्या है? What is multidimensional poverty is? Historically, poverty estimation was done by largely focusing on income as the sole indicator. However, there is criticism that monetary and consumption-based poverty measures fail to capture the impact of lack of other non-monetary factors on standards of living. नीति आयोग ने recently रिलीज किया multidimensional poverty index को and modeled किया on the global multidimensional poverty index, which is joint published कौन करता है? Oxford Poverty and Human Development Initiative OPHI and UNDP United Nations Development Programs. Hi Sarthak. And it captures overlapping deprivation in health, education and living standards. जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर आप देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी रिलीज करता है हमारा UNDP, विच इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. So how is it different from the normal measures of poverty? तो अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, सो नेशनल MPI के पास दे आर 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स. 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स. 1 इज हेल्थ, सेकेंड इज आपका एजुकेशन एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 12 इंडिकेटर्स. और अगर सेकेंड एडिशन की बात करें MPI की, दैट इज बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसने बताया कि इंडिया की प्रोग्रेस है दैट इज रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 में इसको रिलीज की गई. और इस टर्म्स में देखें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, तो आपका उत्तर प्रदेश सॉ द स्टीपेस्ट डिक्लाइन विथ 3.43 करोड़ पीपल मूविंग आउट टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, फॉलोड बाय बिहार, मध्य प्रदेश. तो सब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3.43 करोड़ पीपल जो था मूव आउट हुआ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, जिसको फॉलो करा है बिहार जहाँ पे 2.25 करोड़ है, एंड मध्य प्रदेश 1.36 करोड़. डेटा नीड टू बी रिमेंबर. एंड हियर इज कैन गिफ्ट सिटी ऑफ इंडियाज हांगकॉन्ग. गिफ्ट विच सिटी विच मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर होता है आपका, जैसे गुजरात है अपना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर. तो गिफ्ट सिटी जो इंडिया की हांगकॉन्ग जो आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये बात की गई इस आर्टिकल में कि लाइक जो गिफ्ट सिटी जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को इनॉग्रेट किया गया 2015 में, एंड इट वाज इंटेंडेड टू एक्ट एज अ कंडल टू हेल्प इंडियन कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स गो ग्लोबल, ओपन अप टू द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन कैपिटल एंड ब्रिंग ऑफ शोर ट्रेडिंग ऑफ इंडियन स्टॉक एंड करेंसी. नाउ यहाँ पे जो गिफ्ट सिटी की बात करें, इसको रेगुलेट करता है IFSCA एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर. Number of banks, brokers and other entities have begun operation in the offshore center. Recent experience during the migration of SGX Nifty ने इसके ऊपर बताया, एंड फॉरेन इन्वेस्टर जितने भी हैं दे आर टिपिकली फ्लॉक टू वेल established offshore centers. Entry and exit rules need to be easy and regulators welcoming, जो कि हमारा मेन पर्पस है. और यहाँ पे जो है वाई द फॉरेन इन्वेस्टर्स हेजिटेंट, पहला रीज़न ये है उसके पीछे कि लाइक इंडियन रेगुलेटर्स हैव बीन क्वाइट वेरी अबाउट अलॉन्ग अ फ्री रन टू इंडियन एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑन द गिफ्ट IFSC. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्लेस ऑफ क्रिमिनलाइज marital रेप बिफोर 3 जज बेंच. यहाँ पे एक्सेप्शन है 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. Decriminalize marital rape and the petition are largely triggered by decisions from Karnataka and Delhi High Courts requiring an authoritative pronouncement of the Supreme Court. तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया के कौन है, DY चंद्रचूड़, जिन्होंने वेंसडे को बताया
इसके बारे में। एंड आपको इसमें थोड़े बहुत फैक्ट्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारा इसमें, यहाँ पे ग्राउंड ऑफ मैरिटल इम्यूनिटी फॉर रेप प्रोसिक्यूशन हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द patriarchal discourse in society, according to which husband cannot be guilty of a rape committed upon his lawful wife because she has given up herself in this kind of husband by their mutual matrimonial consent and contract. इसकी इसमें एज जो है वो 15 रखी हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल टॉकिंग अबाउट 40% ऑफ डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव नर्सिंग कॉलेजेस, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा दिया। इसमें आपको ज़्यादा फैक्ट्स नहीं देखनी होगी, यहाँ पे आपको डेटा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बाकी इसमें कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। एंड व्हाट इज़ द पर्पस टू वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज वी शुड अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। उससे आप बहुत सारे MCQs जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि यार ये चीज़ ना इंडिया में ऐसी है। तुम्हारी हेल्थ इंडस्ट्री जो इट मीन्स गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हमारी GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है हेल्थ पे। कैन एनीवन टेल? कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे इंडिया में कितनी % GDP हम कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑन द पर्टिकुलरली ऑन द हेल्थ। नेक्स्ट इज पुतिन विल नॉट ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट। तो इस आर्टिकल में क्या है कि रीजनल ग्रुपिंग आपको ब्रिक्स के ऊपर में पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। सो ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग emerging इकोनॉमीज लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक लीडर्स हैं, समिट इज कन्वीन एनुअली। एंड ब्रिक जो होता है, ब्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज़ एन एनुअल समिट बिटवीन सुप्रीम लीडर्स ऑफ 5 नेशन। और जो चेयरमैनशिप है ऑफ फोरम इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम ब्रिक्स। और बात करते हैं यहाँ पे ब्रिक्स की कोऑपरेशन की, तो ब्रिक्स कोऑपरेशन इन द पास्ट डिकेड हैज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड द एनुअल प्रोग्राम टू ओवर 100 सेक्टरल मीटिंग। और ब्रिक्स अकाउंट करता है 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अबाउट 30% ऑफ द GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेकिंग इट अ क्रिटिकल इकोनॉमिक इंजन एंड इट इज़ एन इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड ग्लोबल पावर ब्लॉक। जैसे आपका G20 है। G20 इज़ अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़ और ये आपके इकॉनमी का 80% पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी को लीड करता है अलॉन्ग G20। और आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका जो है इज़ अ member of International Criminal Court and which issued a warrant against Mr. Putin in March. ऑनलाइन अब्यूज़ अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, इसके ऊपर यहाँ पे आपको ये एक्ट पता होने चाहिए कि यहाँ पे कौन सा IT एक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो इंडिया की IT एक्ट है, इंडियाज़ IT एक्ट ऑफ 2000 दैट क्रिमिनलाइज सम ऑफ द TVSP, but ambiguities in law can deter survivors from reporting, although in law has coaxed some safety improvement technologies. Manufacturing ecosystem for Airbus G295 aircraft taking shape in India. यहाँ पे सितंबर में इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया फोर्स C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड ahead of it 6 pilots have been trained for the Airbus and training of 20 members maintenance crew is currently underway. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा C25 they will ask recently in the news aircraft manufactured by Airbus for the Indian Air Force, Seville, Spain. रिसेंटली न्यूज़ है यहाँ पे घग्गर रिवर के बारे में एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी कॉज्ड हैवक आफ्टर रिक्लेमिंग देयर फूड प्लेन्स इन हरियाणा। घग्गर जो है टांगरी, मरकंडा एंड अदर्स आर कंसिडर्ड डेड रिवर्स इन द स्टेट ऑफ हैवली encroached upon this monsoon season. They reclaimed their food plains and caused heavy losses. Now it's time to questions of the day. And why the questions of the day is important? Because यहाँ से आप ये सोच सकते हो कि आपके एग्जाम में what kind of questions can be framed. Sarthak, if you have any questions, please let me know. The 38th parallel north, frequently in news, it is a border line between 38th parallel, Russia and Ukraine, Azerbaijan and Armenia, Israel and Palestine, North Korea and South Korea.
So it is obvious option D is the correct one. Yeah, 38 parallel is a popular name given to latitude 38 degree. The East Asia roughly demarcates North Korea and South Korea, and the line was chosen by US military planners at the Potsdam Conference July 1945 near the end of World War II, and the army boundary north of which the USSR. Himmler's high mobility artillery rocket system, recently seen in news, is developed by. So the right answer is US. They recently announced $800 million security assistance package to Ukraine. The package includes additional ammunition for the US provided howitzers, Patriot air defense system, and high mobility artillery rocket system HIMARS. And for the first time includes dual purpose improved conventional munition DPICM, or commonly referred to a cluster munition. Which among the following is the nodal procurement agency for pulses in India? So option A is India Pulses and Grain Association, National Pulses Corporation Limited, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India NAFED, and Food Corporation of India. So Food Corporation of India is solely responsible for procurement of rice and wheat, but you need to think about, is it pulse or not? So the right answer is National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India NAFED. So the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India NAFED is the nodal procurement agency for pulses like Food Corporation of India, or FCI is the rice and wheat. The World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development is the initiative of. Amnesty International, World Economic Forum, African Union, and UNESCO. So the right answer is UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. And now is the last questions of the day. The Agricultural Market Information System AMIS is an interagency platform to enhance food market transparency and encourage international policy coordination in time of crisis. Was set up by World Bank, Organization for Economic Cooperation and Development, G20 members, and World Trade Organization.
So the right answer is G20 members. So the AMIS, जो Agriculture Market Information System, is an inter-agency platform to enhance food market transparency and policy response of food security. इसको लॉन्च किया गया था 2011 में and 11 by G20 members for agriculture following the global food price hikes in 2007 and 8 and 2010. So this is all about the session, dear student, and I hope you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding the session, please let me know in the comment section. And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned, enjoy your weekend. We'll meet on Monday. Till then, bye bye and take care.